मिलती रहती है, हर चीज़ की कई जगह प्रेरणा मिलती है। जैसे किसी फ्रेंड मैंने बहुत अच्छा डांस देखा तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी सीखूँ, और कहीं मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी गाना सीखना चाहिए, पर मैंने एक्शन कभी नहीं लिया। तो हैंगिंग ऑन क्यों मुझे इतनी पड़ी उस टाइम पे इतना ज्ञान था, इतनी ट्रेनिंग थी, इतना रिसोर्स मटीरियल था, पर सब कुछ तकनीकी था कि ये आप इंक्लूजन कैसे कर सकते हो, हाउ डू यू डू इंक्लूजन, वही बेसिक्स है। ठीक है, ये टेक्निक है, ये स्ट्रैटेजी है, आप ये सीखें और इंक्लूजन करो। वर्कशॉप, रिसोर्स मटीरियल, एवरीथिंग वाज ऑन हाउ टू डू इंक्लूजन। बट इंक्लूजन करके क्या इमोशनल टर्मोइल हो रहा था, इमोशनल स्टेट क्या था लोगों का, उस पर कोई किताब नहीं लिखी, उस पर किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। ठीक है, तो यही जो ग्रुप था, मुझे लगा कि मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है रेगुलर स्कूल्स में, इंक्लूसिव स्कूल्स में, तो मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। और मेरी वैसे ही रेपुटेशन है कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, मैं कोई बोल देती हूँ जो बोलना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मेरा रेपुटेशन है कि मैं मुश्किल सवाल उठाती हूँ। मैंने कहा चलो मैं ही करती हूँ, मैं ये किताब लिखती हूँ जिसमें मैं वही सब लिखूंगी जो लोगों के मन में गुजर रहा है, जो कि वो महसूस कर रहे हैं लेकिन वो या तो सामना नहीं करना चाहते या बोलना नहीं चाहते। So that is why when I wrote but ठीक है, it was my calling, my inner calling, so I wrote. What did I hope to achieve by writing Hanging On? So मेरे दो Hanging On लिखने के थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी से थे। एक तरफ मेरा उम्मीद था कि लोग जो भी पढ़े वो रीडर थोड़ा कंफर्टेड फील करे कि मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, थोड़ा आश्वासन मिले कि सब लोगों को परेशानी आ रही है, सब लोग समझ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, तो थोड़ा कंफर्ट मिले। और दूसरी तरफ मेरा ये एम भी था कि लोगों में थोड़ा सा फायर जागे, जैसे होता है ना कि थोड़ा दिमाग में आइडिया आए कि इसका कुछ करना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। तो ये भाई थोड़ा सा थोड़ा सा हिम्मत आए कि हम भी थोड़ा वापस आवाज उठाएं, अगर कुछ गलत है तो हम बोले और कुछ बदलने की कोशिश करें। तो इस बुक में आपको क्या मिलेगा? इस बुक में एक्चुअली ये बुक नहीं है, ये एक आईना है, एक मिरर है। ठीक है, इसमें आपको वो दिखेगा, आपको शक्ल नहीं दिखेगी अपनी, पर आपको वो दिखेगा जो अंदर से आप जानते हैं लेकिन आप मानना नहीं चाहते। ठीक है, तो इसमें आपकी जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है दिमाग में, जो आपको कंफ्यूजन हैं, कुछ कड़वे सच हैं जो कि आप जानते हैं पर मानना नहीं चाहते, वो सब चीजें। ये किताब बाकी किताबों से डिफरेंट कैसे है, फर्क कैसे है? किताब जो है बहुत ही छोटी सी है, सिर्फ 100 पेज है, बहुत ही सिंपल है और कार्टून से भरी हुई है। शब्द कम है और कार्टून ज्यादा है।
बिल्कुल तकनीकी नहीं है, कोई क्लास 3, 4, 5 का बच्चा भी इसको आराम से पढ़ सकता है। 2 घंटे में लोगों ने ये बुक पढ़ी ली है। असली सिचुएशन और असली लोगों के बारे में है, तो थोड़ा रिलेट करना आसान है। तो लास्ट में ऐसा कुछ मैसेज है हैंगिंग ऑन का जो कि सब लोगों के लिए रेलेवेंट हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल। है एक मैसेज कि ताकत के बारे में है मैसेज, स्ट्रेंथ के बारे में है मैसेज कि ताकत का मतलब ये नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि तुम मसल बनाओ या हीमैन की तरह लगो। ताकत का मतलब ये है कि मुश्किल टाइम पे भी गिव अप ना करो और लगे रहो। और इतना मन में जुनून होना चाहिए, जैसे कहते हैं इंस्पिरेशन होनी चाहिए, और इतनी ब्रेवरी होनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ काम नहीं कर रहा तो आप चुपचाप मत करते रहो, आप उसको बदलने के लिए कोशिश करो, तो आप डटे रहो। तो ये मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि स्कूल एंड एजुकेशन दोनों ही हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहते हैं। तो आज स्कूल और एजुकेशन के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ला रहे हैं हमारे बाकी के स्पीकर्स। फर्स्ट वी हैव Ms. Rashmi, who is the head of resource center at Sanskriti school, to talk about inclusion in school. Good evening everyone. बड़ा अच्छा लग रहा है कंवल की सुनकर, चैतन्य को सुनकर, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज एज ए स्पेशल एजुकेटर हमने फेस करी स्कूल में जब इंक्लूजन आया। और इट्स बीन अ जर्नी विद संस्कृति। स्पेशल एजुकेटर की जगह खाली हुई और हमने ज्वाइन किया था under Mrs. Ishwaran, who was the founder person and the principal of Sanskriti in the year 1996. और एक छोटा सेटअप बनाया गया जहाँ पर जो बच्चे स्पेशल नीड स्कूल में नहीं आ रहे थे उन बच्चों को मिसेज ईश्वर ने कहा हम अपने स्कूल में एडमिशन देंगे। तो हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे थे, हेयरिंग, विजुअल, सेरेब्रल पॉल्सी, ये वाले। पर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलने लगा और 2016 के बाद तो बहुत चेंजेस हमने देखे एंड वो मॉडल चेंज होता गया। मॉडल चेंज होते होते एक चीज़ जो मैंने देखी वॉज कि जो कंवल कह रही है कि इंक्लूजन भी है रास्ता, लेकिन उसमें हमें बहुत एक्टिवली अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो स्कूल के लेवल पे जहाँ पर स्कूल में संस्कृति में 3000 चिल्ड्रन आर देयर, इफ आई कैन क्रिएट अवेयरनेस एट द स्कूल लेवल, सिर्फ बच्चों में नहीं, स्टाफ में, जो स्टाफ के नीचे लोअर स्टाफ है उनमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्फर्मरी में जो डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पर, को करिकुलर टीचर्स के साथ, तो आई थिंक दैट अवेयरनेस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। और वो मैंने देखा, वो मैंने संस्कृति में वो एक लॉन्गिट्यूडनली वहाँ पर रहकर, मुझे अब 25 साल हो गया स्कूल के साथ। तो जब मुझे मगवा दीदी ने बोला कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन करनी है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग मैं कहाँ से शुरू करूँ, एंड देन आई थॉट आई विल स्टार्ट बाय नरेटिंग 3 breakthroughs that we had about 3 of our children। वहाँ से जहाँ से बच्चों का जो लेवल था, और ये नहीं है कि बच्चा ये कर सकता है या उसमें CBSE ही करना है,
पर वो कोई भी करिकुलम करे, चाहे वो CBSE करे, ओपन स्कूल करे, फंक्शनल करिकुलम करे, वो एक इंडिविजुअल जो बाहर जब स्कूल की दुनिया में निकले तो इंडिपेंडेंट हो, उसकी अपनी डिग्निटी हो, एंड ही और शी कैन लिव अ लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. So this is a short video on this at inclusion at Sanskriti. And tries to be a part of the society where we live. Anis joined Sanskriti school in 2004 and he passed out in 2017. And those were the years where he learned so much that I truly believe that whatever he is today is because of what he has learned in school. Sanskriti is an inclusive school, and I feel that there should be more and more such schools for children with diverse needs so that they can get benefit out of it and they can achieve their full potential. When Anish was 13-year-old, we realized that he is very good in cartooning and he has very good computer skills, so we put him in an institute where he learned Flash animation and he did really well. This is the time we started thinking about his career, and we felt that if given a chance he can do really well in life. So there were many ups and downs while raising him up, but because of the support system from the school, we managed to sail through it. So these were the few snippets that I could put it together. It's a journey that's still continuing. हमें give up नहीं करना है, और एक अकेला इंसान कर सकता है, लेकिन हाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में, कम्युनिटी में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी अवेयरनेस होगा तभी एक्सेप्टेंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. और मैंने ये देखा कि स्कूल्स में अवेयरनेस लाने के लिए हमें लोअर से लेकर हायर तक, और अगर हमारे लीडर्स ओपन है इस चीज़ के लिए, वी कैन ब्रिंग अबाउट अमेजिंग चेंजेस इन द एंटायर सिस्टम. हमें बच्चे को फिक्स नहीं करना है, हमें सिस्टम को चेंजेस करना है, और वो सिस्टम तभी होगा जब अवेयरनेस आएगी. So a big thank you for giving me this opportunity to showcase about Sanskriti. Thank you to the whole family. एक रिफ्रेशर की तरह लग रहा था जब मैंने 1998 में आदि से कोर्स किया और आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ. Thanks to, I would like to acknowledge Madhumati from the bottom of my heart. She's been my mentor and guide through and through. Thank you so much. Thank you for listening. लास्ट में मैंने बटरफ्लाई चूज किया था, क्योंकि बटरफ्लाई है जो चेंजेस लाती है. So I think we need to have that spirit of butterfly in us. Thank you so much.
Thank you, ma'am, and very rightly said about the plan. I now welcome on stage Ms. Chitrangda. She is the president of the Delhi Society for Welfare of Special Children, and she is going to be talking about the importance of special needs in a special school. Good evening to respected guests, educators, medical fraternity and parents. I'm delighted to have this opportunity to speak with you and introduce you to our society. The Delhi Society for the Welfare of Special Children was established in 1965 by my late mother-in-law, Mrs. Yashwant Singh. Being at a time when awareness and support for children with special needs were extremely limited. After her passing in 2009, I have had the privilege of carrying forward her vision, which has been a learning experience for me. Over the years, with the dedication of our board members, teachers, therapists, administrators, we have worked towards building not just an institution, but a supportive ecosystem for our children and their families. Our students come from all sections of the society. From our Teachers Training Institute, 35 fully trained special educators graduate every year. Our core belief is simple yet powerful. Rehabilitation is not just about the child. It is about the family as a whole. At the Okhla Center School, we currently support 145 students from the age of 5 years. The cases range from cerebral palsy, autism, ADHD, Down syndrome, multiple disabilities, speech and language delays, hearing impairment, and other developmental conditions. Each child is unique, and so is their journey. Academics form a part of our curriculum which they are able to imbibe according to their capabilities. We place equal emphasis on sports and co-curricular activities, music, art, painting, and dance. These are not merely recreational. They are therapeutic, developmental, and transformative, providing the physiotherapy and motor skills exercises required for further holistic development of the students. In hockey, football, cricket, they learn to pass, catch, and intercept the ball. In badminton, they learn to identify, concentrate, target, and coordinate their hand, eye, and limb movement. Athletics, hurdle, and relay races help stimulate their need to make eye contact, improve their limb movement and coordination. Yoga is beneficial to cases of Down syndrome due to their flaccid muscle tone. They excel. Bochi helps them focus on a target. Carom with hand-eye coordination. Through these sports activities, our students build coordination, confidence, and social skills. Participation in sports teaches them discipline, teamwork, and resilience. Most importantly, it gives them a sense of joy and belonging. Organizations like the Special Olympics Bharat provide our students with a platform to showcase their abilities on international and national levels, reinforcing the idea that ability must always be seen before disability. The Government of India recognizes it as a national sports federation. They help develop some of the special students with talent into accredited Special Olympic assistant coaches. The special schools in Delhi and NCR organize their own specific sport or sports meets throughout the year, as does the Delhi Society for the Welfare of Special Children. In a nutshell, we can say that adapted sports have recreational, therapeutic, and competitive aspects. The students' participation in sports bolsters their confidence and self-esteem. If shy, improves their communication or poor social skills and helps them concentrate. Instead of being hyperactive,
They learn to take turns and help motivate each other in an atmosphere which is happy and energetic. They are comfortable as they have no disability. They are amongst their peers. They improve their physical fitness, get the required motor exercises and improve their stamina. Moreover, they learn to enjoy participation over victory. Our Vocational Training Institute further supports this journey by equipping able students with practical life skills till the age of 40. They are taught simple, repetitive skills of printing, candle making, handloom weaving, making of file covers, envelopes, masala making and packaging, making jute bags, stitching, tailoring, beauty and grooming skills. The center gives a stipend to its students, providing them with a sense of satisfaction and self-worth. Our diagnostic and counseling clinic offers a multidisciplinary approach, bringing together medical professionals, therapists, and educators to design individualized rehabilitation plans for each child. This happens till the age of 18 years. We also actively engage with families through counseling, training, and community outreach programs. The clinic has a physiotherapy, occupational services, and a sensory integration unit. It is also equipped with an advanced speech and audiology unit. The therapy services are a part of the students' rehabilitative program provided by the school. Assistance is provided in availing of social benefits, concessions, and schemes offered by the government, as disability pension, disability certificate, health insurance, legal guardianship, etc. Students and trainees from different disciplines like social work, physiotherapy, occupational therapy, special education and nursing from Jamia Millia Islamia, Jamia Hamdard University, the Blind Relief Association, Action for Autism, Amity Institute for Rehabilitation Sciences, Delhi School of Social Work, DU, Bhimrao Ambedkar University are placed with us for their training program. For most of our students, the education and rehabilitation processes are completely free of charge. Equally important is our Teachers Training Institute. Established in 1999, it plays a vital role in preparing trained professionals who go on to serve across the country. Their work is not just educational, it is deeply human, requiring patience, empathy, and unwavering commitment. The Intellectual and Developmental Disabilities IDD Diploma is a 2-year course which is recognized by the Rehabilitation Council of India. All-rounded and well-qualified special educators graduate from our institute. They are able to find professional openings in schools of repute all over the country. The Yashorajya Lakshmi Memorial Seminar is organized by us every year. It is an initiative directed towards further augmenting the exposure of students and lecturers at the TTI and the therapists and special educators in all the special schools of the NCR. The audience is addressed by trained professionals from the field. My personal experience with special children is that they look for encouragement and attention. As teachers and fellow human beings, when we interact with them, we need to provide them with the required encouragement, attention, and above all, it should be tempered with patience. The school that they attend is their whole world, which they are familiar with and which understands them. It consists of their friends, their teachers, helpers, and the TTR students who are able to understand and help them deal with the maze that their life presents them. For the TTR students, it's a similar learning experience. There is an immense change in the first year and second year TTR students. From the time they join the course into the 2-year period and when they graduate. The responsibility, empathy, training, knowledge, and patience
that becomes part of them makes them into mature, all-rounded individuals. Special education teachers and PTI students have chosen a remarkable profession, which requires a selfless dedication of time and emotions which I have seen and admired. The purpose of our society is to understand the needs and behavior of children with special needs, the challenges which parents and professionals face while handling them, and to deal with these problems by using different techniques and strategies. All that persons with disabilities want is to be part of society, just like everyone else. However, it can be very difficult to blend into society, find a job, and be constantly confronted with barriers that are sometimes simply insurmountable, especially if you cannot fend for yourself. Working in the field of rehabilitation close to 6 decades, the Delhi Society for the Welfare of Special Children has been trying to address all aspects in the field in order to become an all-encompassing center for experience. Today, I would also like to speak about an issue that calls for both our understanding and our responsibility: supporting children with intellectual disabilities and helping them lead lives of dignity, confidence, and independence. Family support, in fact, is the backbone of a special child's life. Parents dedicate themselves fully to ensuring their child's well-being. An important question remains: what happens in the long term? Siblings often step in, but as they build their own lives and responsibilities, sustaining the same level of care becomes challenging. We must also recognize how sensitive these children are to change. A shift in environment, such as moving to a new city, can create confusion and distress. Stability and routine are not just preferences, they are essential. Another area that needs urgent attention is vocational training and skill development. As the world rapidly evolves, especially with the rise of technology and artificial intelligence, we must ensure that children with intellectual disabilities are not left behind. They deserve opportunities to learn skills that can help them live with purpose and independence. Equally important is their social life. Companionships, friendships, and simple joys like school outings or group activities are vital. However, access to these experiences often depends on time, resources, and awareness within families and communities. And unfortunately, these opportunities tend to reduce as the child grows older. We must also confront the negative attitudes that continues to surround intellectual disabilities. True inclusion begins with awareness, acceptance, and sensitivity within our homes, our institutions, and our society, not just for the child, but for the entire family. Ultimately, our goal should be clear: to raise individuals who are confident, capable, and as independent as possible. At the same time, we must equip them with the awareness and life skills needed to protect themselves from exploitation. This is not the responsibility of any one institution or family alone. It is a shared responsibility of educators, policymakers, communities, and each one of us. As I conclude, I would like to say that working with special children teaches us some of life's most profound lessons: patience, compassion, resilience, and unconditional acceptance. Let us move forward with empathy and commitment, ensuring that every child, regardless of their abilities, is given an opportunity to lead a meaningful and fulfilling life. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I now request Jayshree ma'am to felicitate our guest.
starting with Mr. Chaitanya. We have a young giver with Jayshree ma'am today. राजू भाई साइड में Chaitanya sir. आगे Rashmi ma'am, if you could present Chitrangda ma'am, please. यार राजू भाई साइड थोड़ा करो Thank you, Rashmi ma'am, please. Kanwal ma'am, can we have you on stage as well, please? Thank you, esteemed speakers. अलग से कर दे While we get ready for the next segment, I would like to take a moment, even though I may get scolded for it later, because Madhumati ma'am will never take the spotlight, but I think it takes a lot of effort to put together something this large scale, and half of us, or more than half of us are here because we know Madhumati ma'am, so if we can have a huge round of applause for her. Wherever you're holding back, thank you. Now we have a panel discussion. Please help me in welcoming our very own special educator, Jayshree ma'am. Jayshree ma'am has an experience of 32 years in special education. She has worked in different sectors such as private clinics, hospitals and NGOs. Thank you, Jayshree ma'am. We will have our panel discussion on inclusive education. So for that, I would like to invite Ms. Prachi Joshi. Mr. Arjun Kumar. Ms. Neeraja. Dr. Rachita Misri, Mrs. Vigilance Unit, and
Mr. Vikram. No questions, yes. But with RTE Act, Right Education Act, Persons with Disability Act and National Education Policy, more and more schools are getting included, becoming inclusive, and more children are going into special school. Of course, there are certain problems, infrastructure problems, society's bias or shortage of teacher, all those problems are still there. So it is a process. We are in the go of it. Today in this panel, we have very well qualified and experienced professionals from well-reputed inclusive schools and from special school. And then we have parents with their very inspiring stories, and parents who will be speaking about CBSE, the roles of CBSE in inclusion. And then we have moving beyond education, we have healthcare. We are just touching upon healthcare with some insurance policies. So, on behalf of our entire team, I thank you all for taking up time and here. Thanks. So first we begin with Ms. Prachi Jayshree. What we are planning to do is, everybody speaks. After everybody has spoken, if we have time, we can take some questions. So Ms. Prachi Jayshree holds a PG diploma in psychotherapy and masters in clinical psychology. She also has a fellowship in child and adolescent psychotherapy from Washington Martineau Center for Psychoanalysis. Presently, she is associated with Cambridge School, New Friends Colony as a psychologist. So, Cambridge School is another school that has been successfully following the inclusive philosophy. So, we would like to know, Prachi, from you. It is often said that inclusive education is not only for children with special needs, but it is for all. So, which is very important because our children with special needs do get benefits, but other children also learn a lot by being in an inclusive setting. So, I would like Prachi to share about what kind of learning children learn being in an inclusive setting. And also in a fast-paced life, where children are already bogged down by the vast syllabus and other activities, how in your school you have fostered healthy relationship among the diverse groups. Unless there is that relationship, inclusion will not mean anything. So thank you so much. Thank you all for sitting here and listening to us. So I'm Prachi. I'm working with the Experiences Clinical Psychologist. And as for the questions that you have asked now, I think inclusive education setup का सबसे important task ये होता है कि हम क्या जो भी बच्चा है क्या हम उसके साथ वहाँ मिल पाते हैं जहाँ पर वो है, क्या हम उसकी एबिलिटी मैच कर पाते हैं, क्या हम उसकी स्किल्स मैच कर पाते हैं. अब ये चीज़ सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए लागू होती है. एंड आई थिंक हमारी नासमझी होगी अगर हमें लगता है कि जो हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं उनको इन सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, उनको इन हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको इक्वली सपोर्ट स्कूल सपोर्ट की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर पीटर ने जब बताया था कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं अर्ली ऑन जो कि स्पेशल जैसे भी लग सकते हैं. अटेंशन की डिफिकल्टी होती
होती है बच्चों को, सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेगुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ये सारी डिफिकल्टीज किसी भी एज ग्रुप में किसी भी बच्चे को आ सकती है। स्पेशली हम नर्सरी ऑनवर्ड्स देखते हैं, पैंडेमिक के बाद हमने बहुत नोटिस किया है कि बच्चों में डिलेज आ रहे हैं, वो बोलना लेट शुरू कर रहे हैं, उनके बाकी चीज़ों में भी डिलेज आ रहे हैं। बहुत अर्ली ऑन बच्चों को स्क्रीन का एक्सपोजर दिया जाता है, वर्चुअल ऑटिज्म इज द थिंग। सो अगर एक इन्वायरमेंट में, अगर एक स्कूल में इस चीज़ की एबिलिटी नहीं है कि टीचर्स उस बच्चे को उसकी एबिलिटी के लिए नहीं देख पा रहे हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगे। तो एक इंक्लूसिव सेटअप सिर्फ ये मेक श्योर नहीं करता है कि स्पेशल नीड्स के बच्चे को उसकी स्पेशल एजुकेशन एक कमरे में जाकर अकेले मिलती है, वो उन बच्चों का भी ध्यान रखता है जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जिसे सर बताया था। इन सब चीज़ों का भी बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है और सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं। तो एक इंक्लूसिव सेटअप मेक श्योर करता है कि बच्चों की नीड्स को केटर किया जाए, सब बच्चों। सो दिस इज एकेडमिक्स। आई थिंक सेकेंड पार्ट ऑफ कोर्स इज सोशल। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बने, लीडरशिप क्वालिटीज हों उनमें, वो आगे बढ़े, एम्पैथी हो उनमें, वो बाकी लोगों का ध्यान रखें, समझ आए उनको कि किस तरह से आपको लोगों की सब चीज़ों सब लोग हों, जानवर, सबका ध्यान रखना होता है। सो दीज आर द स्किल्स दैट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू हैव, हम चाहते हैं। बट ये सारी स्किल्स बहुत रेयरली आप एक किताब से उठा पाते हो या फिर आप एक मूवी से उठा पाते हो। ये सारी की सारी स्किल्स आपको रियल लाइफ में भी सीखनी पड़ती है। तो अगर एक इंक्लूसिव सेटअप नहीं है तो एक बच्चे अलग अलग कोनों में स्किल्स नहीं सीख पाते हैं। जब सब बच्चे डिफरेंट एबिलिटी के, डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के सब एक क्लास में होते हैं तो बच्चों को स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है ऑन अ डेली बेसिस। मैंने नोटिस किया हमारा स्कूल पिछले 17 साल से एक इनिशियली एज एन इंटीग्रेटेड सेटअप में स्टार्ट हुआ था, बट अब हम बहुत ज़्यादा इंक्लूजन के ऊपर फोकस करते हैं। एंड नर्सरी ऑनवर्ड से हम नोटिस करते हैं कि जब बच्चे आते हैं और स्पेशल बच्चे भी क्लास में होते हैं तो इतने छोटे बच्चों में नहीं होता है फ़र्क किसी भी बच्चे के लिए, वो उसको अपना क्लासमेट ही मानते हैं, वो उसको अपना पेयर ही मानते हैं। हमने नोटिस किया है कि अडल्ट जो होता है उसके मन में ज़्यादा संकोच होता है बात को। अदरवाइज चिल्ड्रन आर नेचुरली वेरी एम्पैथेटिक और एक इंक्लूसिव सेटअप में इंश्योर कर सकता है कि उनकी सेंसिटिविटी, उनकी एम्पैथी, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बच्चे बहुत मोर देन हैप्पी होते हैं हेल्प करने के लिए हमारे स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं। एंड दैट इज वेरी हार्ड फॉर अस। एंड हम पेरेंट्स को ये दिखाते हैं टू शो दैट कि दिस इज व्हाई इंक्लूसिव सेटअप इज इम्पोर्टेंट। सो बोथ सोशल एंड एकेडमिक स्किल्स में हेल्प मिलती है एक इंक्लूसिव सेटअप से बच्चों को। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि फास्ट पेस लाइफ में हम इतना स्कूल्स बहुत एक क्लॉकवर्क की तरह चलते हैं, एक पीरियड के बाद ये क्लास होती है, फिर ये असाइनमेंट होता है, फिर ये टेस्ट होता है। सो यस, schools are very rigorous like that. सो हमारा स्कूल फोकस करता है कि हम बच्चों को छोटे छोटे पॉकेट्स दें जहाँ पर उनको भाग दौड़ वाला काम ना करें, उनको स्लो डाउन करने की अपॉर्चुनिटी मिले। आई थिंक काफ़ी स्कूलों में अब वेलबींग क्लासेस होती हैं, SCF क्लासेस होती हैं, लाइफ स्किल्स क्लासेस होती हैं। ये क्लासेस हम बहुत सीरियसली लेते हैं, यहाँ पर हम बच्चों से मिलते हैं, सर्कल में बैठते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन क्लासेस में डाइवर्स चिल्ड्रन, न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और हम बहुत बार इन क्लासेस में कोशिश करते हैं कि हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करें ताकि इंक्लूजन सिर्फ एक मार्क ना हो, एक्चुअली एक पूरे स्कूल का इकोसिस्टम बने। हमारे पास सेवरल टाइम्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बड़ी सिस्टम में बहुत रीइंफोर्स करते हैं बच्चों के लिए कि एक स्पेशल स्कूल है, उसके साथ एक भी बच्चे भी हम उसको हेल्प कर पाए किसी चीज़ के लिए जो उनको चाहिए। अदर देन दैट हम बहुत रेगुलरली अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने इन द पास्ट डिसेबिलिटी वॉक्स की हुई हैं कर्तव्य पथ पर। हमारी डिसेबिलिटी अवेयरनेस सिर्फ टीचर से रिलेटेड नहीं होती है, हम अपने सब कर्मचारी को भी समझाते हैं कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट नाउ एवरीबडी इज वेरी वेलकम, वेरी ओपन। इवन जो पेरेंट्स भी आते हैं हमारे स्कूल में वो भी समझते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल है और स्पेशल बच्चे हमारे स्कूल का पार्ट रहेंगे और वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। दैट बीइंग सेड,
जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी विच इज़ कि सरकार ने एक नियम बना दिया है कि आरटीई राइट है जिसकी वजह से सब बच्चों को एजुकेशन कंपल्सरी है और कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता है किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए, तो ये रूल बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करा है जो मिसिंग है काफ़ी सारे सिस्टम्स में, विच इज़ कि स्कूलों को सिस्टमिक सपोर्ट नहीं मिला है ये चीज़ें प्रैक्टिस करने का। हम बहुत लकी हैं कि हमने पॉलिसी लेवल पे काम किया है, हमने नीचे से लेकर ऊपर तक काम किया है, तब हम अब जाकर इस लेवल पर पहुँचे हैं कि इंक्लूजन हमारा वे ऑफ वर्किंग कर रहा है इसमें। बट आई डू नोटिस द नीड कि बाकी सब स्कूलों को बहुत ज़्यादा सिस्टमिक वर्क करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर सारे बच्चे नहीं संभाल सकता है, इट इज़ अ होल स्कूल अप्रोच। हर टीचर, हर पेरेंट, हर कर्मचारी, हर कैंटीन के जगह सब लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। Thank you so much, Prachi. You brought out all your programs so well, and also very conscious. I mean, one has to make a very conscious effort for children to be in a very inclusive setup. It's very important. Otherwise, it is not just the mere presence of child with disability in a classroom without doing anything. But unless we have a proper program in place and enforcing those programs, right? So that's very important. Thank you so much. Now we have the second panelist is Dr. Vijay Based. Dr. Vijay Based is Head of Academics and Rehabilitation at the Society for the Welfare of Special Education. We just saw Ms. Chitrangda video also. As an occupational therapist by profession, Dr. Based has been in the field of rehabilitation for last 5 decades. And she started her journey in this field with Christian Medical College and Brown Hospital in Ludhiana. Later, she was appointed by Ministry of Social Justice and Empowerment in one of the regional centers of National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, IDA. She started her first intervention clinic in a government sector, and she also worked as an early intervention therapist as a faculty for diploma courses such as BA in Special Education and Bachelor's in Rehabilitation. Now, I mean, more and more schools are becoming inclusive and they have programs in place. What is the, and it is very important also we need special schools because not all children are at the moment with the current facilities are able to get into the mainstream school. So some children require those intense support. So special schools are important. Yoga Center, I mean, the Society for the Welfare of Special Children has been running for many years. And so it also must have undergone changes, keeping in mind whatever is happening around, I mean, whatever changes is happening in this inclusive education system. So we would like to know what should be the role of special schools in this current scenario. And also you run a teachers program, training program. How, I mean, what kind of training, because ultimately they have to go either into mainstream school teachers. Teaching is very different from special education because special education we deal with children. Mainstream school is, I mean, whole class. So what kind of changes you have brought in the training also? Yes. Sorry, good evening everyone. So, I'm working on the Society for the Welfare of Special Children. We take care of special children. I'm on her since contact a couple of years. हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, but do we really know that inclusion is possible in every field and in every state? Okay, now is it okay?
So we are working on a special school. और स्पेशल स्कूल में जो है स्पेशल बच्चा आता है हमारे पास में बच्चे हैं चाइल्ड के भी आ रहा है हाइपरएक्टिव बच्चा भी आ रहा है and we have started doing early intervention. So initially the change is like when initially the special school was started, so they were working in isolation. अलग से वो अलग काम कर रहे थे, but now they have become a part of the mainstream. अभी जो है वो सबके साथ मिलके काम करते हैं. Special schools are also working towards inclusion. And give you an example. Last year only, we gave dancing therapy services to our children, and there are 4 children. जिन्हें हमने तीनों dancing therapy, occupational therapy, therapy, special education, and sports. Work with them because parents were not too much aware of the condition. उनके साथ जितना ही वैसे काम किया गया कि now those 4 children they have gone to the scheme and 2 are in the Chitrangda and 2 are in Jammu. So that is what we are doing. It's not that we are just keeping the children in the school. And special school is also what we are going to do in Srinagar. So these 4 children are very well set up. But sometimes what happens is you are working with these children. Now another child like a child was he went to and after 2 years, child को बच्चा नहीं को कर पाया and mother ने दोबारा बच्चे को हमारे स्कूल में वापस लेके आ गए. So these situations keep on coming and rising. आती नहीं और जाती नहीं. These situations आती रहेंगी और now I can also tell myself. So ऐसी situations जो होती रहेंगी जाती रहेंगी, but हमारा जो main मुद्दा है जो मेन काम जो हम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए कि हमें जो है अपने स्पेशल स्कूल्स को भी वहाँ पे इस तरीके से काम करने की अगर हमारा कोई भी बच्चा किसी दूसरे शहर में जा सकता है या मिनिस्ट्री में जा सकता है सो वी मस्ट सेंड द चाइल्ड देयर एंड मोर ओवर इन आवर स्कूल आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर वी पुट देम इन अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. नाउ वोकेशनल ट्रेनिंग में जाने के बाद हमारे कुछ बच्चे अपने 11th में प्लेस करें. 11th में प्लेस करने के बाद बच्चे एडजस्ट भी हो गए जस्ट बिकॉज के पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लिया. बट नाउ देयर आर अदर 2-3 चिल्ड्रन हु आर डूइंग वेरी वेल. आई थिंक मैम हैज ऑलरेडी शोन दिस स्लाइड दिस चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल इंडिपेंडेंटली. वो सारा काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग रीडिंग, दे आर डूइंग रैंडम मेकिंग, दे आर मेकिंग एवरीथिंग, दे आर मेकिंग पेपर बैक इंडिपेंडेंट. But you have a when you go to parents, then you can put the child in a normal system in open environment. But parents were not willing and they were not keen to put their child just because the school takes the responsibility. हम ले रहे हैं responsibility कि हम बच्चे के पास जाएंगे, हमारा psychologist जाएगा, काउंसलर करेगा, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको जो है समझाएंगे, उन्हें अवेयरनेस करेंगे, सेंसिटाइजेशन करेंगे. But ultimately when the child leaves the school, child is in a very protected set environment. So the child leaves the school, so it becomes the responsibility of the parent. So in our center, we give stipend to these special children after taking. So parents are happy whatever stipend we are giving. वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए बस हमारा बच्चा आपकी बस में आ रहा है, तुम्हारा बच्चा है आपके यहाँ काम कर रहा है. Whatever child is getting, we are happy with that just because at times the parents are also even more and the sibling. Sibling rivalry is also there. All siblings will don't care of their brothers and sisters. So what who is going to take care? So parents say कि नहीं आप अपने पास रखो बच्चा 17 बार कर सकते. So this is one thing. But on the other thing, these centers, these special centers also, like our center is also working as a resource center. We are giving intensive therapy also to children. Intensive therapy के बाद जो है हमें resource center बनाते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. स्पेशल एजुकेशन दी जाती है. उनके स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस में बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर बहुत कुछ सीखते हैं. एंड इन आर टीचर ट्रेनिंग बहुत से इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट initially those students go only to the education, not being responsible for it. After the diploma was in development, they are to provide input in intellectual disability, ASD, subject matter disorder, as well as specific learning methodology. So now more and more people are coming and are asking about it.
So these students, now for the maximum 4 years, these 2 year students got every year 35 students pass out and they go to different school, and they are being much far better than the other students who is vulnerable to know. They are also doing fine because they have experience. But now in the 2 years course, they are doing much better. And sorry, I'm sorry. It goes on and on. So these students have been much better. बहुत अच्छा कर रहे हैं पहले से. और ये बच्चे जो हैं बाद में CBSE प्रोजेक्ट में भी जाके काम करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड भी एप्लीकेशन में भी जाके काम करते हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, सेंसिटाइज भी करते हैं लोगों को, एंड देन दे गो टू normal setup also, they go to inclusive setup also. So these children are being given exposure to everything. So it's not that we are working on a special school and the special school is not doing anything. We are also working towards mainstreaming and inclusion. But the only thing at times, the slow learner we don't take. Slow learner the negative they go to inclusive setup. तो बच्चे थोड़ी बुद्धि थोड़ी सी सामान्य है, फिर हम रहती है वो तो वैसे भी inclusive setup में जाते हैं. और जो माइंडली इंटेलेक्चुअली से बड़े होते हैं वो बच्चे भी सेटअप हो जाते हैं. मेरी प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के लिए. तो सिलेबरी रिटार्टेड है या जो मॉडरेटली रिटार्टेड है उनके लिए जो है इंक्लूसिव सेटअप में जो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो ऐसे बच्चों के लिए जो है इवन इफ वी सेंड द चाइल्ड इन इंक्लूसिव सेटअप, द राइट टू एजुकेशन इज देयर, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज आल्सो देयर, बट व्हाट अबाउट दीस चिल्ड्रन? So our main focus is these children, the severe and the moderate children who are not able to adjust in any of these streams. So we work towards them to give them intensive therapy. So then also the main objective of working with this is not the academic skill, it's the social skill, it is the functional skill. We teach them functionality नहीं. बच्चे को अपना काम करना आना ज़्यादा जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है? क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? काम करना आना जरूरी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. पढ़ाई तो बाद में करेगा, पढ़ाई करेगा अपने लेवल के हिसाब से. तो ये वाले जो बच्चे हैं इनके लिए जो है स्पेशल स्कूल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं हो सकते. नाउ आई विल शेयर वन ऑफ द एग्जांपल्स विद यू. लास्ट वीक ओनली वन चाइल्ड केम टू मी एंड he in a area in center he is going to a normal school. He is in 6th standard. So when I was doing the assessment of the child, so the child was not even able to hold the pencil. He was not able to display blame. And वो बच्चा 6th standard में है, तो मेरे से पूछा गया कि 6th standard में कैसे आया? तो वो टीचर्स ने खुद ही पेपर लिख दिया और खुद ही बच्चे को पास करके दे दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा जो है पढ़ता है 8वीं क्लास तक है और इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं. So this kind of an inclusion is not at all acceptable. I am very sorry to say this is not inclusion. So they should have sent the child then and there. किसी स्पेशल स्कूल में भेज देना चाहिए था, क्योंकि उस बच्चे को इतनी एबिलिटीज ही नहीं है. So ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, और जो ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें हम मेनस्ट्रीम में डाल सकते हैं we do. And we keep on doing this. It's not this 1 year I did last year we did 4, and we keep doing this. We keep sending them to mainstream and inclusive setup. But वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो कहीं पर भी नहीं सेटअप होते. अब एजुकेशन के अंदर तो पेरेंट्स के पास राइट है, वो तो बोल भी जाने को तैयार है, बट who will take care of those children जिनको कहीं पर भी नहीं रखते हैं. उन बच्चों के लिए जो है स्पेशल स्कूल होना बहुत जरूरी है. इंक्लूजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम स्पेशल स्कूल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू जयश्री, आपने बहुत अच्छे से बताया कि in the middle of inclusive schools, special schools also have a place. And you have program from early intervention to vocational training. So child can learn, the child can remain engaged more meaningfully in a setup also. Now we are moving on to some wonderful parents with their inspiring stories, and we get to learn a lot. Though in the morning also we had several parents sharing. And we'll continue. So we begin with Dr. Rachita. Dr. Rachita is Kush's mother, जिसका हमने अभी परफॉर्मेंस सुना था जान, और इमीडिएटली ये रहा परफॉर्मेंस रहा उसका. And Kush has successfully completed his 10th grade again with flying colors, 96.5
so good. And Kunsh has successfully, then he has, he's learning to play both drums and guitar, drum and guitar. He's social and has friends in school and in his colony. Dr. Rachita is a dermatologist working in a limited hospital in South Delhi. Rachita is juggling between both profession and studying alongside Kunsh's education and therapy and getting new confidence and above all encouraging him to pursue his passion. So we would like to hear about your journey. Thank you for your kind words. Good evening, everyone. So, Kunsh was diagnosed at the age of 18 months, and from the age of 20 months only, he started his therapies in the form of ABA therapy, speech therapy, occupational therapy, special education. He went to a play school also for some time with a shadow teacher, and after getting admission into school, he was partly going for his therapies and partly going to school, not full-time school. And gradually, as the therapies decreased, the school time gradually increased. We gave him exposure to a lot of activities because we didn't know where his interests were. So we exposed him to swimming, tennis, dancing, singing, anything and everything. But gradually, we decided to, after many years, we decided that he wants to learn the drums and guitar. So we encouraged him. Regarding social interactions, we exposed him to a variety of social interactions, always taking him everywhere, चाहे सारे relatives के घर, in all marriage functions, going door to door in the colony कि बच्चों को भेजो खेलने के लिए पार्क में हमारे बच्चे के साथ. So we did everything what was possible, and he learned a lot from all the social interactions. But कभी-कभी जो चीज़ हम उसे सिखा नहीं पाए, वो बाकी के बच्चों ने उसे सिखा दिया, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो. School was very cooperative. We used to have a lot of interaction with all the teachers and therapists. My evenings were all reserved for him. So this entire journey has been deeply challenging but rewarding as well. मैंने काफ़ी कुछ सीखा इससे. There were times when things were very overwhelming, but we decided and we took an effort to understand his pace. Celebrate small milestones and not treat him as a project which I have to accomplish. Always remember to love him. Kunsh's personality has been shaped by, we have been constantly encouraging him and supporting him in his decisions, supporting him in building friendships, and providing him an environment in which he feels accepted and cared for. हमेशा to be there for him always, to listen him out and not compare him with any other kid. Kunsh has been able, we encourage Kunsh in taking decisions that pertain to himself, whether there are decisions regarding what interests or what hobbies he wants to do, what subjects he wants to study in school, about his daily routine aspects, what he wants to wear, what he wants to do. So taking decisions is difficult for him, but we see to it that we give him a structured, we take it down into small, easier options and make him understand what are the consequences of each action that he decides to do. And gradually withdrawing and giving him the support so that he thinks that he is taking a decision himself, but knowing at the same time that we are there to guide him. So lastly, I would just like to end with that, have empathy for your child, be persistent, don't give up, and believe in your child even on the hardest days. Thank you. Beautifully said, Rachita. And especially talking about decision making. A lot of times हमारे बच्चों को decision make करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है. And but again, you have to think, consciously think about helping the child to make decision, which is very important. Now we move on to another parent, Neerja. So based in Delhi, Ms. Neeraja is a corporate communication and training professional who pivoted her career to focus on intensive early intervention for her daughter Rashmi, who is on the autism spectrum.
by balancing structured mainstream schooling with a focus on independence and vocational skills. She has successfully championed a life of inclusion and social segment for her family. Ms. Neeraja now balances her professional work with advocacy and care, emphasizing on the importance of community support and self-care for caregiving journey. For a child with special needs, it's not, in addition to therapies and education, good nurturing environment is very important for a happy, healthy, secure life. And Neeraja, you are a parent of twins, and living in a joint family. How do you balance intense caregiving needs of Rashmi with emotional health of her twin sister Jayshree? That's one question. And also share from your experience what should be the key role of parents for ensuring active involvement of the extended family members also. Thank you so much for having us here and giving us this platform to share our thoughts. When we say joint family, it has become a rare entity. बहुत कम देखने को मिलती है joint family. और जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो बहुत सारा प्यार, एक साथ को सब साड़ी और गहने पहन के करवा चौथ मना रहे हैं, दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन पड़ता है, विच इज़ ट्रू. We do celebrate festivals and have fun, but then behind those 10-11 people, we were a family, a joint family of 11 people with a joint kitchen. उसके पीछे बहुत सारे challenges भी होते हैं, क्योंकि relationships जहाँ आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स के, सबकी अपनी अपनी चाहते हैं और अपने अपने गोल्स होते हैं, और इस chaos, इस loving chaos के बीच में we were faced with Rashmi's diagnosis, and the goals that I had for Rashmi became completely different from how we were living our lives in that joint family. And my first instinctive reaction was कि मैं इस सब chaos से, इस सब responsibilities, ये socialization, इन सब चीज़ों से मैं पीछे हट जाऊँ, क्योंकि अब तो मेरा तो चालू हो गया भीतर, मुझे अपने बच्चे की सारी थेरेपीज करानी है, मुझे उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. You know how it is, जब हमारे बच्चे का डायग्नोसिस हुआ होता है तो हम बहुत जल्दी में होता है, हमें अपने ऊपर भी टाइम नहीं खर्चना होता है और हमें अपने परिवार वालों के ऊपर भी टाइम नहीं खर्चना होता. So, but somewhere I had to look at Srishti also. Somewhere I also had to look at the long-term part of things. Being an emotional person, being the person जिसके लिए social relationships बहुत ज़रूरी हैं. उस वक्त मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या मुझे ये जो social input है, क्या मुझे ये नहीं चाहिए, और अगर मुझे ये प्यार और ये social input चाहिए तो मुझे जो responsibility ये लोग मुझसे वापसी में मांगते हैं, commitment और reciprocal, क्या वो मुझे नहीं देना चाहिए. So इस मुकाम पे मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, एंड आई सेड यस, आई वांट बोथ ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. एंड फिर मैंने बहुत ओपनली अपने जॉइंट फैमिली के साथ कम्युनिकेट किया कि देखिए ये चैलेंजेस हैं और ये लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं. ये इसकी रोशनी का ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी और फिर वो खत्म हो जाएगा. ये सारी ज़िंदगी मुझे अपनी एनर्जी और अटेंशन उस पर लगानी है, बिकॉज रोशनी हैज़ वेरी हाई नीड्स. एंड सो ये मेरा सिचुएशन है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी चाहिए. ये डे टू डे रोज़मर्रा का क्या खाना बनेगा और क्या खरीदना है ये मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर लाइफ में कभी भी आप लोगों को कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है या जो भी है तो मैं आपके साथ हूँ, एंड आई विल डू माई बेस्ट. सो एज अ रिजल्ट आई गॉट द दिस ओपन कम्युनिकेशन, एंड उनको भी दे डिडंट नो, If I didn't know what was autism, they didn't know either. तो मुझे उन्हें समझाना पड़ा. मुझे याद है कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए, बिकॉज आई मैरिड इनटू अ बंगाली फैमिली, मैंने बांग्ला में किताबें ऑटिज्म के लिए खरीदी, बारे में खरीदी, एंड मैंने उनको दी कि ये दिस इज व्हाट ऑटिज्म इज, एंड ऐसे होगा, ऐसे हमारी ये प्रोग्नोसिस जर्नी रहेगी. साथ ही साथ मैंने सृष्टि के लिए भी, मुझे लगा कि अब ये तो बच्चा जो है इसका भी एक बचपन है, रोशनी का भी एक बचपन है, तो मुझे और एक बड़ा चैलेंज भी है, तो अब हम इसको क्या करें. तो मैंने
थोड़ा लाइफ हैक मारा कि मैंने उन्हें सारी एक्टिविटीज कंबाइन कर दूँ कि अगर रोशनी एक स्पेशल कोच के पास CBSE के जा रही है तो सृष्टि भी जाएगी, अगर रोशनी सोशल ग्रुप क्लासेस के लिए जा रही है तो सृष्टि भी वहाँ पे जाएगी। एंड एज अ थेरेपिस्ट के लिए वो हेल्प भी होती थी क्योंकि वो एज अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड यू नो शी वुड बी that prop that they could use. So planning and having this goal in your mind that let's not lose the sight of our children's childhood. Let's give them as many typical experiences. Let the fun portion not go out of their lives is what helped me, and that helped me leverage the love, the affection, the resources that my joint family had, and I have been supported tremendously by my joint family. And my only message to the parents here is that if we want the community support, we have to communicate very openly with the community, because half the time the community doesn't know the support that we need. You know, so we have to tell them. Yes, we have to create a boundaries. अगर मैं किसी प्रोग्राम के लिए मैं नहीं जा सकती क्योंकि उस वक्त रोशनी की कोई थेरेपी शेड्यूल है तो मैं वो भी कराऊंगी, मेरी वो बाउंड्री भी है। लेकिन अगर मैं जो कर सकती हूँ तो मैं भी उनके लिए शो अप करूँगी। दैट मेरी जॉइंट फैमिली, आप लोगों की जॉइंट फैमिली नहीं हो सकती, तो यू दिस एग्जाम्पल कैन बी रेप्लिकेटेड टू एनी सिचुएशन। इट कैन बी पीपल इन योर हाउसिंग सोसाइटी, इट कैन बी योर फ्रेंड एंड योर ग्रुप, but I think open communication, having your goals very focused, that मेरे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या जो भी है, या मुझे अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी खुद की मेंटल हेल्थ पूरी हो जाती है अगर मेरा सोशल इनपुट नहीं मिलेगा। ये सब गोल्स रखना दिमाग में, एंड देन ट्राइंग टू शो अप फॉर द पीपल दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू शो अप फॉर यू। सो दैट्स हाउ आवर जर्नी हैज। थैंक यू नीरजा जी, You beautifully brought out the importance of with extended family, how we have to proactively reach out to get that kind of a support from the family. It's very important. Now we move on to Mr. Arjun, who is going to speak about CBSE units. Mr. Vikram is the father of 11-year-old child, Devansh. He, along with his wife, Chairperson, parent of young Priyansh. Mr. Arjun is a graduate from Delhi University. He has been associated with CBSE for 11 years. And for the past 9 years, he has been working in the Vigilance Unit, CBSE, dealing with complaints that come to the department. CBSE has been playing a major role in promoting inclusive education. So we would like to know about what kind of provisions that CBSE did to promote inclusion, and also as a vigilance as a person in vigilance department, what kind of how do you respond to the complaint that you receive? So, thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you everyone. Only that we are running short of time, so you can give breaks. Because handouts are also there with every participant. Right. मैं CBSE में वर्किंग हूँ लास्ट 11 ईयर से, और 9 ईयर से वर्किंग हूँ सतर्कता विभाग जो कि विजिलेंस यूनिट है। और अभी जैसे कि मेरे पास कई तरीके की कंप्लेंट्स आती रहती हैं, तो आप लोगों के पास भी इस तरीके की कई समस्याएं हो सकती हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को किसी तरीके की परेशानी ना हो, स्कूल में किसी तरीके का उसके साथ भेदभाव ना हो या किसी तरीके की ऐसी परेशानी ना आए। और इस विषय में CBSE द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। स्पेशली अभी मेरे पास एक कंप्लेंट चल रही है जिसमें कि किया गया है, उसका मैंने सर्कुलर भी ले लिया है, जिसमें सर्कुलर 2015 का है और एजुकेशन में 2017 का है, जिसमें कि एक स्पेशल एजुकेटर मैंडेटरी है हर स्कूल में होना। और यही नहीं कि बस वो स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट कर दिया गया है, उसको उस विषय में प्रशिक्षित भी किया गया है, वो ट्रेन भी हो। और IEP जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स को बना सके। और इसमें ये CBSE का डायलॉग्स, ये एप्लीकेशन डायलॉग्स में 13.11 में आपको मिल सकता है, आपको आप वेबसाइट पर जाकर के भी इसे सर्च कर सकते हैं। और इसको ये RTE एक्ट 2009 के कंप्लायंस में किया गया है, जो कि मैंडेटरी है। और इसमें CBSE द्वारा जो किया जाता है, सबसे पहले परीक्षाएं हैं जो कि एप्लीकेशन एग्जामिनेशन डायलॉग्स के अंतर्गत आती हैं।
इसमें कुछ रियायतें दी जाती हैं जो कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन से स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। इसमें सबसे पहले तो परीक्षाओं में जो कि हमारे बच्चे जो बैठते हैं जो स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है उसमें उनको प्रति घंटा 20 मिनट्स दिया जाता है पेपर देने के लिए। अगर पेपर 3 घंटे का है तो उसको 7 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, अगर 2 घंटे का है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात है कि विषयों को जो लचीलापन दिया जाता है जो कि उनके कौशल के अंदर उनको दिया जाता है। अगर कोई बच्चा कोई मैथ का या कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता है तो ऐसा सब्जेक्ट का चयन कर सकता है जिसमें कि वो कंफर्टेबल हो, उसको पढ़ सके, जैसे कि पेंटिंग से किसी को कोई वोकेशनल सब्जेक्ट से। तीसरा जो उसमें मुद्दा है ये है कि जो स्कूल्स को एफिलिएशन जब हम प्रोवाइड कराते हैं, किसी स्कूल को संबद्ध करते हैं एफिलिएशन के CBSE के साथ में, तो हम उसके बुनियादी ढांचे को देखते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसमें कि सभी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में रैंप होना चाहिए, एक्सेसिबल टॉयलेट्स होनी चाहिए, बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए जिससे कि किसी बच्चे को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके बीच जैसे कि शिकायतें आप कहाँ कर सकते हैं, आपको परेशानी होगी कि इस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम है हमारे बच्चे के साथ, तो हम कहाँ शिकायत करें। शिकायत के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखित में शिकायत दें स्कूल में, जिससे कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं कि हाँ हमने वहाँ पर ईमेल के थ्रू या लिखित में कोई शिकायत हमने स्कूल में दी है। उसके बाद भी यदि आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप हमारे रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि दिल्ली में हमारे 2 रीजनल ऑफिस है, दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट में आप कर सकते हैं, और अपने क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी भी रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी जो कि हमारी वेबसाइट में उनके ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, लिखित शिकायत आप उनको ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है विजिलेंस यूनिट को भी आप शिकायत कर सकते हैं। विजिलेंस यूनिट में आप शिकायत करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपना आइडेंटिटी जरूर दें उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, दे वांट टू क्या आइडेंटिटी से, तो उसमें क्या करा जा सकता है, हमारे पास एक CBSE का पोर्टल है PIDPI है, उसके PDPI के अंतर्गत शिकायतें दी जाती हैं। ये कोई पोर्टल नहीं है, इसमें लिखित शिकायत दी जाती है, जिसमें कि आप अपने किसी भी कंप्लेंट को लिफाफे में पैक करके डाल करके उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको अंदर डाल सकते हैं। उसमें आप अपना पता दे देंगे तो इसका जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी इंक्वायरी या जाँच की जाएगी आगे स्कूल पर या किसी और विभाग पर, क्योंकि इसमें मोस्टली होता क्या, CBSE जो है कंप्लेंट्स देखता है जो कि करप्शन से रिलेटेड है। ये करप्शन से रिलेटेड अगर कंप्लेंट नहीं होगी तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको डील किया जाएगा, जिसमें कि उस पर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप इसको सेक्रेटरी CBSE का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे सकते हैं सेक्रेटरी के नाम से। और इसके बाद आप जो कि CP ग्राम पोर्टल है, PMOPG पोर्टल है, उन पर भी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें कि आप CBSE को टैग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ एक्ट्स होते हैं जिसके अंतर्गत आपके बच्चों को कुछ सुविधाएँ दी गई हैं, जिसमें कि RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन 2009, इसके अंतर्गत बच्चे को काफ़ी शिक्षा से संबंधित बातें बताई गई है, जिसका कि एक रिपीटेशन में अलग से दिया गया है आगे, जिसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों के लिए जिनको आवश्यकता है। उसमें RPWD एक्ट है, ट्राइबल पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकारिक नियम है। उसके अंतर्गत आपके बच्चे की मुफ्त शिक्षा है, कोई स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। 6 से 18 साल के बच्चों को सभी को मुफ्त शिक्षा का इसके अंतर्गत अधिकार दिया गया है। एक इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर के अभी कई चीज़ें जो कि CBSE में भी इनके अधिनियम से ही उस सर्कुलर को बनाया है, जिसको भी देखते हुए हम इसको स्कूलों में दिया गया है। अब इसमें कई बार
सॉरी टू कट यू, सॉरी, ये सब इंफॉर्मेशन आप लोग पैम्फलेट में दिया है ना, इस सारे फॉर पीपल टू रेफर टू, ठीक है? वो जो सबको हैंड आउट जो किया गया है उसमें सारी ये सब इंफॉर्मेशन है जी, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने जैसे सीबीएसई पर बात की, और एक जो बात हुआ है कि कम टाइम को देखते हुए या वी हैव वन मोर स्पीकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Now, Mr. Vikram, the last speaker is Mr. Vikram. He is the father of 11-year-old child Vikansh. He, along with his wife Chairperson, has been advocating both with government and private insurance agencies for changes in the policies that can address therapy and other medical needs of the child, of the children with disabilities. In the interest of helping other parents, he has been conducting several awareness workshops for parents. So, Mr. Neeraja, we would like to know about the current insurance policies that are in place and some insurance policies that you talk about it, which are in the pipeline. You can quickly talk. You go back. जी, मेरा नाम विक्रमपुरी है, मैं देवांशपुरी का फादर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मधुमती माँ और पूरी फैमिली को थैंक्स देना चाहता हूँ कि यहाँ उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ में कुछ स्पेशल बच्चे भी हैं और उनकी कुछ स्पेशल नीड्स भी हैं। मेन सबसे जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो है उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज पहले से रनिंग में थी उसमें फर्स्ट जो पॉलिसी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है निर्भया पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये तीनों पॉलिसी जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसको लेने के लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी होना बहुत जरूरी है। बिना इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के आपको ये पॉलिसीज नहीं मिलेगी। सेकंड, निर्भया पॉलिसी है, इसमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू ये मिलती है और इसमें 1 लाख का सम इंश्योर्ड है। इस पॉलिसी की जो सबसे खास बात है वो और किसी पॉलिसीज में नहीं है। फर्स्ट 20,000 का थेरेपी रिम्बर्समेंट इसमें दिया जाता है और 15,000 तक का ओपीडी रिम्बर्समेंट भी दिया जाता है, जिसमें मेडिसिन भी हो सकती है, डॉक्टर की फीस भी हो सकती है और डायग्नोसिस भी हो सकती है। 45,000 तक का ये सर्जरी का रिम्बर्समेंट देते हैं और 4,000 का इसके अंदर आपको डेंटल ट्रीटमेंट मिलता है। क्लेम प्रोसेस बहुत इजी है इनका, बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने होते, सिर्फ एक ही फॉर्म है, वो भर के आप उनको कोरियर कर सकते हैं और वो आपको ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा आपको अपडेट करते रहते हैं अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम होती है या उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है। ये एक पॉलिसी है और ये सब इसमें जो ईयरली प्रीमियम है, फर्स्ट टाइम जो प्रीमियम है वो 500 रुपीज़ है एंड सेकेंड टाइम से लेके और जब तक आप इसकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं इसमें जो अमाउंट आता है वो 250 के आसपास आता है। बिलो जो गरीबी रेखा वाले हैं उनके लिए प्रीमियम और कम है इसके अंदर। वो जो मैम ने आपको पम्पलेट्स इसके दिए हैं आपकी सबकी फाइल्स में होंगी, उसके अंदर इसकी डिटेल्स मेंशन है। सेकंड है हमारे पास अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरे भारत में तो पहले से ये पॉलिसी थी आयुष्मान भारत योजना, पर दिल्ली में नहीं आ पाई थी पॉलिसी और लास्ट ईयर 19 सितंबर को ये दिल्ली में लॉन्च हुई और इसके बाद सबसे पहले जैसा कि मुझे तो उम्मीद थी कि सबसे पहले ये डिसेबल्ड पर्सन्स को दी जाएगी, बट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी सबसे पहले 70+ पर्सन्स को दी और उसके बाद हमने और कुछ पर्सन्स ने गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई कि इसके अंदर आप डिसेबल्ड पर्सन्स को भी लेके आइए। बहुत खुशी हुई हमें कि सेकंड फेज में हमारे बच्चों को इसके अंदर अटैच किया गया और 2 महीने पहले इसकी घोषणा की गई और परसों ही मैंने अपने बच्चे का इसमें एनरोलमेंट कराया। विदिन 5 मिनट ये पॉलिसी बन गई। इसके अंदर 5 लाख का जो सम इंश्योर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, 5 लाख का सम इंश्योर्ड आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। टोटल रिम्बर्समेंट जो है वो 10 लाख रुपीज़ है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी हॉस्पिटल्स में चलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने से पहले आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि वहाँ पे आयुष्मान भारत योजना अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड कि इस पॉलिसी में आप सिर्फ
एडमिट होते हैं वहाँ पर तो भी आपको रिम्बर्समेंट मिलती है, और आफ्टर एडमिट 15 दिन के जो और रिम्बर्समेंट होता है ओपीडीज का वो आपको दिया जाता है। इसमें ओपीडी ये कवर नहीं करते हैं, और थेरेपी का बिल भी इसमें नहीं दिया जाता। थेरेपी सिर्फ तब इंक्लूड होती है जब आफ्टर कोई सर्जरी है, रिहैब के लिए अगर आप इसमें यूज कर रहे हो उसको, उस टाइम आपको इसमें पैसा रिम्बर्समेंट किया जाता है। एंड थर्ड है प्राइवेट पॉलिसीज। प्राइवेट पॉलिसीज में हर बच्चे के हिसाब से मैंने लास्ट 1 वीक में स्टार हेल्थ और इंश्योरेंस में कई बार बात की है, वहाँ पे पता चला है कि ये पॉलिसीज दे रहे हैं बट सब बच्चों के हिसाब से इनके पास अलग अलग पॉलिसी है। वहाँ पर पॉलिसी लेते समय बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, उनको सारी चीज़ आप डिस्क्लोज कीजिए, क्योंकि उन पॉलिसीज के अंदर, प्राइवेट पॉलिसीज के अंदर प्री डायग्नोसिस आपको दिखाना पड़ेगा, और आफ्टर 3 ईयर ही प्री डायग्नोसिस का आपको वो लोग रिम्बर्समेंट देंगे। 3 ईयर तक आप मान के चलिए कि सिर्फ आपको पैसा पे करना है, 3 ईयर तक आपको उस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी की जो 2 पॉलिसी मैंने आपको बताई थी उसमें प्री डायग्नोसिस का कोई रोल नहीं है, प्री डायग्नोसिस उसके अंदर पहले से ऐड है, उसके अंदर आपको डायरेक्ट हर बीमारी का पैसा दिया जाएगा। एंड जो अपना प्राइवेट पॉलिसीज हैं, प्राइवेट पॉलिसीज में बस आप सारी चीज़ उनको बता के चलिए पहले से कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है वो आपको बता के चलना पड़ेगा। वो आप अकॉर्डिंग, उनके प्रीमियम थोड़े से हाई हैं, अराउंड जैसे मेरा बेटा 11 साल का है तो 18 साल से अगर कोई भी बच्चा नीचे होगा उसके अंदर उनको प्राइवेट पॉलिसीज में एक मदर या फादर में से एक को वो अटैच करेंगे, और अराउंड उसका जो 5 लाख का जो प्रीमियम आता है वो 20 से 22 हज़ार पे आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि डायग्नोसिस वो कवर नहीं कर रहे। तो बेटर है कि दिल्ली में तो हमारे पास 2 पॉलिसीज ऑलरेडी रन कर रही है, फर्स्ट निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस एंड सेकंड आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अटैच हो गया है और बहुत जल्दी आप उसको पॉलिसी उसकी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो निर्भया जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है, फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी ऑनलाइन नहीं होगी, इसके लिए कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे आदिज है मेडिकल के पास में, और आप जब नेट पे इसके बारे में सर्च करेंगे तो सेंटर का डिस्क्लोज आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम पॉलिसी वहीं से होगी, सेकेंड टाइम आप उसको अपने घर से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, आपका वॉइस आप हिंदी में बात करेंगे जी। देखिए इसमें ना 40% की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि पॉलिसी लेने के लिए 2 डॉक्यूमेंट बहुत नीड है। फर्स्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% से ऊपर होना चाहिए, सेकंड आपका यूडीआईडी अपडेट होना चाहिए, उसमें आपको पॉलिसी मिलेगी। और आप जब पॉलिसी साइट्स पे जाएंगे और अगर इनकेस आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और आपकी पेंशन आ रही है, आयुष्मान भारत तो अगर आपकी पेंशन आ रही है तो आयुष्मान भारत तो आपको हाथ हाथ मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने सारा डाटा वहीं से उठाया है, निर्भया अपना गवर्नमेंट के पोर्टल से उठाया है, तो सारा डाटा आपको सिर्फ वहाँ पे केवाईसी करना है और आपको पॉलिसी मिल जाएगी। निर्भया वाले केस में 40% से अबव है, कुछ डिसेबिलिटीज है जो उन्होंने नहीं कवर की है, वो आपको एक बार वहाँ पर देखना पड़ेगा, या टीम होली फैमिली से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। Thank you. I think we won't be able to take more questions away. Thank you all for being here, and it was a wonderful learning experience for all of us. Thank you so much. I would now request Jayshree ma'am to facilitate our speakers, please. With us for our thankful dinner. Prachi ma'am. Vijay ma'am.
Will. Vikram sir. Mr. Arjun Kumar. Dr. Rachita. Ma'am, please accept one certificate as well. Neerja ma'am. Can we now request our handsome Diva to facilitate Jayshree ma'am, please? Speakers, you could please. Last but not the least, I would also request Mr. Gaurav Singh and Mr. Saurabh Singh. They have been volunteering as our speech language interpreters. Thank you so much for your service. So, I would like to invite the early intervention team on stage. On behalf of team, I would like to thank everyone who made this event successful by their efforts both behind and in front of stage. Thank you so much everyone. Last but not the least, can we have Mr. Chaitanya on stage, please? Last set of facilitation. Thank you so much for being so patient, everyone. Can we have Mr. Chaitanya facilitate? Ajay sir, Didi ma'am.
Nidhi ma'am, our occupational therapist, who's been working behind the scenes with us all day today. Next we have Ajay sir, our occupational therapist, who's been running around, managing the mic, sound and everything. Thank you, Ajay sir. We also have Shraddha ji, our coordinator, who made sure everyone gets whatever they need. We will now facilitate Tanya Kapoor for her wonderful hosting right from the morning to the evening. She has been a good. Thank you so much. Thank you everyone for being so patient. Thank you our volunteers who've been working a lot, who haven't really shown their face. Thank you for the audience for being patient and learning with us. It was indeed a great experience for us. Hoping to see you again. Thank you. Participant certificates will be outside the hall. We request you to be patient and collect them with us.